हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस पॉइंट के। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे आज। सो देखते हैं। पहले तो पहले तो एक गर्ल की स्टोरी है। अ, अ, पहले एक गर्ल की स्टोरी है जिसमें ये मतलब कि इसको आई मीन कि इसको खेलना, आई मीन मेले में जाना बहुत अच्छा लगता था इसको। पॉट्स, प्लेन्स, बहुत अच्छे लगते थे। प्लेन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका नाम जाननी था, जाननी। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे जाननी के बारे में। ओ सॉरी, गलत अंडरलाइन हो गया लगता है। सो मैं कह रही आज हम पढ़ेंगे जाननी एट द मार्केट। सो जाननी looked forward to the fair in the village। जाननी ने देखा कि हाँ, कि अब एक मेला लगने वाला है विलेजेस में। शी loved she loved to see uh, she loved to see and touch the pots and planes of shiny steel, bright plastic baskets, clothes printed with blighted floors designs and clockwork toys. All of which came from the city. The men who spread out their wares come in come in buses and trucks and went back the back and hello friends, welcome to my channel एस पॉइंट के। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो ट्रेडर्स माने जो सेलर्स होते हैं। आई मीन एक चीज को दूसरी जगह पर जाते हैं। किंग्स मतलब राजा, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री वाले। सो इस वीडियो में पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाओगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये गर्ल दिख रही है, इसका नाम है जाननी। आज हम इस गर्ल के बारे में पढ़ेंगे, जाननी एट द मार्केट। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे जाननी looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and planes of shiny steels, uh, bright plastic baskets, clothes printed with billy ants, floral designs, and clockwork toys. All of these came from the city. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained them. They were traders, people who brought things where they were made and sold them easy earlier. ओके, सो हमने इस गर्ल की स्टोरी तो पढ़ ली ना। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। सो लेट्स मूव टू ओके। You read about the northern black polished wall in chapter 8. This fine pottery, especially bowls and
plates were found from several archaeological cities throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the place where they were made to sell them at their places. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तो ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अव ओके. सो इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ अभी कि जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स. जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया पता है साउथ इंडिया किस किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो गोल्ड के लिए, ऊपर से स्पाइसेस स्पेशली पेपर के लिए, और प्रीशियस पुराने ज़माने के स्टोन्स. ओके. पेपर पेपर was particularly uh, Pepper was particularly valued in the Roman emperor. जो पेपर होता है ना, वो क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पेपर होता है ना, वो पार्टिकुलरली वो वैल्यूड होता है. आई मीन वो रोमन एम्परर ने पहले इस इसका वो इन्वेंट आई मीन रोमन एम्पायर ने इनको पहले यूज़ किया था. ठीक है. सो so much so that it was known as a black gold. so जो बनाते थे ना ये पेपर से, सो ये इसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे. So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trades, as many Roman gold coins have been found in South India. ओके. सो अभी हम इसकी एक्सरसाइज करने के भी ट्राई करेंगे कि हमसे हो सकती है इसकी एक्सरसाइज. थोड़ी डिफिकल्ट है बिकॉज गाइस हिस्ट्री तो मेरे को आई मीन कि मेरे को हिस्ट्री अच्छे से आती नहीं है, इसलिए तो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ. मेरे को पढ़ना सब कुछ आता है, समझ में भी आई मीन हिस्ट्री मेरे को ना समझ में नहीं आती. कोई कोई बच्चा होता है ना जिसको हिस्ट्री समझ में नहीं आती. सो इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंक्लूड हूँ. चलो. Okay, now here it is a poem about trade. ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो पढ़ते हैं. We can find and evidence of trade in Sangram poems. Here is one which describes the good brought into Pura. Pura, an important port on the east coast. Here are both brought swift prancing horses by sea in ships, blends of black pepper and cards, schemes and gold born in Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas, and and corals from eastern ocean, the yield of the Ganga and the crops from Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar. सो यार क्या ये थोड़ा ना मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा ये, बिकॉज गाइज आई एम ऑल्सो इन क्लास 6. आई एम ऑल्सो इन क्लास 6 माई सेक्शन. ओके. आप सब ना मेरे को कमेंट करना कि
योर सेक्शन, ओके। योर सेक्शन मेरे को कमेंट करना आप कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपकी सेक्शन क्या है। सो लेट्स मूव। यहाँ पे मैं बताई भूल गई एक लास्ट लाइन। एंड अदर रेस, अदर रेस, ओ शिट, एंड अदर रेस एट रिच imports imports ओके। सो लेट्स, ये पोयम तो हो गई हमारी फिनिश। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पहले हम देख लेते हैं कितना बड़ा चैप्टर है ये तो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, ये कितना बड़ा चैप्टर है। शी मैन शिट, 12 पेजेस इसके अंदर टोटल। ओ माय गॉड। ओके। सो मैं इसका पार्ट टू भी, आई थिंक हो सके तो मैं लेके आऊँगी इसका पार्ट टू, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सो अभी के लिए जहाँ पे हम थे, हम ज़रा वहीं पे रहते हैं। आगे बढ़ने का भी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। सही बोला ना मैंने? हाँ। ओके। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड traders explored several sea routes. Some of these followed the coasts. There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Guys, आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वो किस तरफ है ना। थैंक गॉड आप लोगों को मालूम है। आप लोग ना ये पूरा मैप होता है ना, मैप, पॉलिटिकल, ये फिजिकल, ये थीमेटिक मैप, पूरा मैप रट के रख लिया करो। सोशल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, हर एक पेपर में आता है। सो वेयर सेलर्स took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa or uh, Iberia, they chose to sail with the southwest monsoon and sturdy ships. यार क्या लिखा होता है इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को मेरे को ना, मतलब ये जो हिस्ट्री है ना, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। बोरिंग सी हिस्ट्री पता नहीं किसने बनाती, चलो ट्राई करते। एंड sturdy ships had to be built for these long journeys. Oh thank God, हमारा ये सब खत्म। Now new kingdoms along the coast. Okay, इसमें है the southern half of subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus, and river valleys. Are amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Fertile chiefs and kings who controlled the river valleys and coasts became rich and powerful. Sangam poems mention the Muvandar. This is a Tamil word meaning three chiefs, used for the head of three ruling families: the Cholas, Cherias, and Pandyas. ओके। यहाँ पे आप मैप, अगर आपके पास अभी बुक है ना आपकी, तो यहाँ मैप नंबर मैप 7 में देखना, पेज नंबर 105। उस पे सब कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु बिकेम powerful in South India around 2300 years ago. Each of the three chiefs had to center of power on island, and one on the coast of these six cities. Two were very important: Puhar or Kaveri, Kaveri Patinam, Kaveri Patinam. हाँ, the ports of Cholas and
मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ओके गाइस, ये कैपिटल्स ना, ये कैपिटल्स वगैरह वगैरह याद रखना, पूछते हैं सारा आपसे। सबसे पहले तो आप एक मिनट, सबसे पहले तो आप पता है ये याद रखना, ये। ओके, उस उसके बाद आप ये याद रखना, फिर ये, हाँ मीन ये, फिर ये पूरी लाइन, ठीक है। आपको मतलब ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, आपके पेपर में सारा कुछ आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर ही चुन लेते हैं अच्छा सा कोई। ओके, सो हमारे हो गया था ना यहाँ पर। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड and received gifts from the people. They also went on military expedition. Oh shit, कहाँ पे थे गाइस? गलती से हो गया मुझसे, पता नहीं कैसे, सॉरी। एक्सपेंडेशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम neighboring areas. They kept some of wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family. Soldiers, sorry, हाँ, soldiers and poets. Many poets who compositions are found in the Sangrim collection, composed poems in passe of chiefs who often rewarded them the precious stones, gold, horses, elephants, chariots, and fine clothes. Around 2000 years later, a dynasty known as the Satavahanas become powerful in Western India. आप ये भी सी मैप 7 पेज नंबर 105, मतलब कि पेज नंबर 105 पे आप सब कुछ देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेज नंबर 105 पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैप दे रखा है हम लोगों को। लेट्स गो 100। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? अच्छा, आगे 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 आगे, इस पेज नंबर 102 है, ये सिर्फ 102 तक ही है। चलो कोई बात नहीं। ओके, मैं आपको आई मीन कि आप अपनी बुक में देख लेना, आपकी बुक में मतलब आपकी बुक में है ये। और जो अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है ना, ये पूरा है, और पेज नंबर 105 आप ज़रा देखना, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपका बुक भी नहीं होगी ना, तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऑनलाइन भी आपको सर्च करना, ये सर्च करना, ठीक है। चैप्टर 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 9, chapter 9 history, class 6 history। ओ शिट, यहाँ पे लिखते हैं chapter 9 class 6 history, और लिखेंगे पेज नंबर यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 105। तो आपके सामने वो मैप खुल आई मीन आपके सामने आप पहले इसको मैं रब कर देती हूँ, रुको यार, मेरा रबिंग अच्छा हो गया। सो आपके सामने इस तरह का मैप खुल जाएगा, सो आप देख के कर सकते हैं वहाँ से। ओके, सो नाउ हम लोग आगे मुड़ते हैं, हम कहाँ पे थे? हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास एंड गुप्ताम गुप्त गुप्तामी पुत्रा है यार, कैसे कैसे वर्ड होते हैं ये, गुप्तामी पुत्रा। श्री
श्री सक्ताकन यार क्या वर्ड होते रहते हैं ये, मतलब कि मतलब क्या हिस्ट्री बनाई किसने है? साता Satakrani, who known about his from an inscription composed on behalf of his mother Balhasri. He and other Satavahan rulers were known as lords of the dark dark Dakshinapatha Dakshinapatha Dakshinapatha, हाँ गाइस, ये वर्ड को जरूर लर्न कर लेना, दक्षिणापथा. ओके, दक्षिणापथा, literally the route leading to the south, which was almost used as a हाँ used as a name for the entire southern religion. He sent his army to eastern, western, and southern coasts. So इतना हमारा हो गया है. नाउ हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. ओके, एक मिनट, हाँ. द रिच glossy colored colors of silk, as well as its smooth texture, make it a highly valued fiber in most societies. Making silk is a complicated process. raw एक मिनट, हाँ. Raw silk has to be extended from cocoons. Cocoons देखे हैं आपने? जो cocoons, आई मीन मैं आपको अभी एक ही एग्जांपल दे सकती हूँ. cocoons में जो बटरफ्लाई, आई मीन जो बटरफ्लाई होती है ना, मान लो ये बटरफ्लाई है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये बटरफ्लाई है, ये उसके थोड़े विंग्स हो गए. कोकून, पहले बटरफ्लाई कैसी होती है? एक छोटी कैटरपिलर की तरह होती है. वो एक कोकून में रहती है, जो वो कैटरपिलर खुद बनाता है. मीन्स कि पेड़ पे वो होती है लटकी हुई कोकून्स, वह कहीं पे भी बना देती है. सो जब ये बड़ी होती है, कैटरपिलर से ये बटरफ्लाई बनती है, तब वो अपने कोकून को छोड़ देती है. कोकून का मतलब बहुत ही इस्तेमाल होता है. सो यही इसमें बता रखा है. सो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा भाई आ गया यहाँ पे. जोना, हेलो. हाँ गाइस, सबका पढ़े थे. ओके, spun into thread and then woven into cloth. ठीक है, यहाँ पर नाउ नेक्स्ट है techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago. Will the methods remained closely closely graded secret for thousands of years. Some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camels carried silk with them. Paths they followed came to be known as the Silk Road. Sometimes Chinese rulers spent gift and silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the
ओह, थक गई बहुत ज़्यादा गाइस। द नॉलेज ऑफ सिल्क। अरे यार, हाँ, ये मैंने पता नहीं मुझसे क्या हो जाता है बार बार। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू गाइस, सो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स कंटिन्यू। Knowledge of silk spread further west. About 2000 years ago, wearing silk became a fashion um, amongst ruler and rich people in Rome. It was very expensive as it had to be brought all way from China along dangerous roads through mountains and through mountains and deserts. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. Look at map 6, page 76 77. Okay, देखते हैं पेज नंबर 76 एंड 77। यहाँ तो गए, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है ये पेज नंबर 91 से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को बुक में ही देख सकता अब तो ये, which shows the Silk Route and its branches. Some kings tried to control large portion of route. This was because they could be fined benefit from taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along to root in return. They often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. The best known of the rulers who controlled the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. There are two major center of Peshawar and Mathura. Takshila was also included in their kingdom during their rule. A branch of the Silk Road extended from Central Asia down to separate at the mouth of the river in Indus. From there, silk was shipped west, westwards, westwards to Roman Empire. The Kushanas were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. These were used by traders along the Silk Route. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं कर सकते हैं, सो चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। अभी हमारा 5 पेज नंबर पर है, हमें 12 पेजेस पढ़ने हैं, तो लगता है मेरे को पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा इसका। ओके, फिलहाल के लिए हम आज के लिए ना आज के लिए हम कहाँ से पढ़ना है, रोक दे। चलो, आज के लिए हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म्स। ठीक है, बाकी का गाइस बाकी का तो नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्ट लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है बाकी का, तो ठीक है। सो द द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म्स। The most famous Kushana ruler was Kanchika, who ruled around 19 years ago. He organized a Buddhist council. गाइस, हो सके तो हम लोग पूरा ही पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका पूरा चैप्टर। Who
met and discussed important matters. Aswaha Aswahag Hosha Aswahag Hosha, a poet who composed a biography of the Buddha, Buddha Chata, lived in his court. It has, यार इन नेम से बहुत डिफिकल्ट है. As Ghosha, Ghosha, and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. A new from Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. This had to distant distant uh, fetters. Earlier, the Buddha's prescience was shown in Supalter by using certain signs from from instance. He attend attainment of enlight, enlightenment was shown by isolators of people tree. Now status of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura, while other were made in Takshila. The second change was a belief in Bodhisa, Bodhisattvas. Bodhisattvas. These are supposed to be person who had enlightened enlightenment. Once they attended an enlightenment, they could live in complete isolation and meditation in peace. However, instead of during that, the remained in the world of teach and help other people. The worship of Buddhistas became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. Buddhism also spent to Western and Southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. Some of these caves were made on the orders of kings and queens, other by merchant and other by merchant farmers. These were often located near passes through the Western Gates Road, continue, connecting perspiration prods on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these caves. Monasteries. During their travels, Buddhism also spread southeastwards to Sri Lanka, Myanmar's Ta- Thailand, and uh, other other parts of Southeast Asia, including Indonesia. The older from the Buddhism known as
tra- uh, thriving Triva, Triva, Trivada, Trivada Buddhism, Buddhism, Buddhism was more popular in this area. The quest of pilgrims, as traders journeyed to distance uh, distance lands in caravans and ships. Pilgrims often travel with them. ओके, यहाँ पे हमें पिलिग्रिम मतलब पिलिग्रिम का मतलब है तीर्थ यात्री. अब तीर्थ यात्री को हिंदी में कैसे लिखते हैं वो तो मेरे को मालूम नहीं. देखते हैं ट्राई करके. तीर्थ त ओ सॉरी त त ईरत नहीं, ये तो उसके ऊपर आता है ना. नहीं र तीर्थ तीर्थ यात्री यो आत्र यात्री. हाँ, तीर्थ यात्री. अब पता नहीं सही है गलत है. तीर्थ यात्री बोलते हैं, ठीक है. सो pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. The best known of these are Chinese Buddhist pilgrims. क्या लगा रखा है मैंने. फा एक्सन हु ये जो फा एक्सन थे ना, ये देखिए. आई मीन ये फा एक्सन थे ना, ये चाइना से आए थे. ठीक है, याद रखना. ये फा एक्सन कम फ्रॉम चाइना, who came to subcontinent about 1600 years ago. ये क्या कहते हैं, ये जो फा एक्सिना है ना, मेरी मैम ने मेरे को बताया था. पहली बात तो ये चाइना से, आप सबको मालूम है. दूसरी बात है पैदल चल के आए थे चाइना टू इंडिया. ये पैदल चल के आए थे. यू बिलीव्ड कि ये वॉकिंग करके आए थे. भाई हम तो 2 मिनट का एक दूध, मम्मी बोले बेटा दूध लेके आ, हम वहां तक जाने में थक जाएंगे. चाइना से पैदल आए थे. ये कि इनकी हालत खराब नहीं हुई. बंदे हैं यार, लगता है बंदे अच्छी मतलब एक्सरसाइज करते होंगे. चलो देखते हैं और भी जानते हैं सबके बारे में. और भी कई बंदे हैं. 16 years ago, Yuhan Zan, who came around 14 years ago. पहले तो पहले तो थे एक्सिन जो इंडिया चल के आए थे. कोई सब कॉन्टिनेंट, आई मीन मेरे को इतना श्योर नहीं है कि मेरी मैम ने सब बोला था कि ये चाइना से आए हैं. हाँ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये आई थिंक ये चाइना से पैदल 1600 years ago पहले आए थे. और जो एक्सुना जंग है ना, वो चाइना से लेके इंडिया तक 1400 years ago पहले आए थे. एंड बहुत सारे और जानते हैं. ओके. आई आई क्वीनिंग आई क्वीनिंग आई क्वीनिंग ओके. सो ये थे आई क्वीनिंग जो आए थे 50 years ago आफ्टर युहान जंगा. एक्सियन सॉरी एक्सियन जंगा. एक्सियन जंगा के बाद आए थे ये. एक्सवान जंगा के बाद आए थे. एक्सवान जंगा कब आए थे? 14 years ago पहले. ये आए थे 15 years आफ्टर. 50 years बाद. मतलब कि एक्सवान जंगा के बाद आए थे ये. ओके. They come to visit places accorded with the life of the Buddha, chapter 6, as well
as well as famous monasteries. And आगे भी है monasteries. Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on these travelers, which often took years of the countries about, and the monasteries that the visited, and the books they carried back with them. सो ये पोएम तो खत्म. नाउ नेक्स्ट है हमारी हाउ हाउ फा एक्सेन टर्न टू चाइना. ये ब्रो ये चाइना से आए थे. मैंने सही बोला था. कम फ्रॉम चाइना. ओके, लेट्स रीड अबाउट फा फा एक्सिन. Fa Exin began his journey back home from Bengal. He he boarded a ship. Belonging to some merchants. Merchant ना क्राफ्ट पर्सन की लिस्ट में आता है. ये मर्चेंट क्राफ्ट पर्सन भी होता है. ठीक है. Belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. Fast Faxen threw away his margi personal belongings but clung to his book. clung to मेरा sheep from sinking. पढ़ लिया. But clung to his books and the status of Buddhas that he had collected. Finally, the storm subsides after 13 days. This is how to describe the sea. The sea itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west extent by observing the sun, moon, or star in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plane is to stray by wind. It took him more than 90 days to reach Java, where he halted from for 5 months before border board, boarding another merchant ship that took them to China. सो अब हम पढ़ते हैं. बताऊं किसके बारे में? बता दूं जुहान जांग, जो भी आए थे चाइना से. एक मिनट. जो भी आए थे चाइना से. सो Zuhan Zanga, who took the land route back to China. China carried back with them statues of the Buddha made of gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscriptures loaded on the backs of 20 horses. Over 50 manuscriptures were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the ride of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. अच्छा, पहले होते थे ना जो मैन्यूस्क्रिप्चर बुद्धास वगैरह लिखते थे, वो लिखते थे संस्कृत में.
ठीक है। ये जो थे ना जुहान जांग, इन्होंने चाइना गया, ये चाइना गए। चाइना जाके इन लोगों ने एक काम इन्होंने काम किया। इन्होंने जो मैन्यूस्क्रिप्ट, एक मिनट, हाँ, 1 मिनट। ये जो मैन्यूस्क्रिप्चर्स है ना, संस्कृत में लिखे थे, इन्होंने उनको चाइनीज से ये, तो ये जाते थे कि ये चाइना वाले भी इन मैन्यूस्क्रिप्चर्स को पढ़े। तो इसलिए इन्होंने संस्कृत से चाइनीज में को ट्रांसलेट कर दिया। मतलब लिखा तो संस्कृत में था, हमारे बुद्धि समझ रहे, लेकिन इन्होंने चाइनीज भाषा में लिख दी। ये याद रखना, ठीक है। ही He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. ये आपके फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन में आएगा कि जो जुहान जांग थे, उन्होंने क्या, आई मीन, किस में ट्रांसलेट किया, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्चर को, और कैसे वो मैन्यूस्क्रिप्चर्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो आप लिखोगे he spent the rest of his translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. Okay, याद रखना. Now, Nalanda, a union country, union center of learning, Buddhist learning. Zhuan and other pilgrims spent time studying in Nalanda, बिहार में है. The most famous Buddhist monastery of the pride. This is how he describe it. The teachers are men of the highest ability and talent. They follows the teaching of Buddha in all century. The rules of the monastery are street, and everyone has to follow them. Discussion are discussion are held throughout the days, and the old and the young uh, mutually help one another. Learned men from different countries come here to settle their doubts. The gat Gatti, the gatekeepers ask कितना है? new enter new entrants di- uh, difficult questions. They are followed to allow enter only after they have been able to answer this. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. Oh, list a reason why Zhan wanted to study Nagaland. So इसका आंसर तो बहुत बड़ा है आपको, नहीं छोटा सा, ये छुटकू सा नहीं, बहुत बड़ा है आपको। आई मीन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा, समझे। मेहनत करो, मेहनत मैं भी करेगा, क्योंकि मेरे भी पेपर आ रहे फाइनल। बाप रे, मैं फेल नहीं हूँगा। मेरे को अगर मैं तैयारी करूँगा तो मैं फेल कैसे होऊंगा। चलो, अभी कितने बाकी है हमारे, हैं ये 4 में हम कैसे आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब तो पढ़ लिया ना। नाउ अभी हम लोग 8 पे हैं, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। 8, 9, 10, 11, ओके, बहुत कम बाकी है, फटाफट पढ़ लेते सब कुछ, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, दिस was also the time when the worship of central dieters, which become a central feature of lateral Hinduism gained in importance. These deities included Shiva, Vashu, and
and goodies such as Durga. These titles were worshipped through bhakti, an idea that became very popular that this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or his or his chore di- deity anybody whether rich or poor belonging to the so called high or low caste, man or woman could flow the path of bhakti. The idea of bhakti is present in Bhagavad Gita. भगवत गीता, हाँ गाइस, ये मत भूलना कि जो हमारा आइडिया था ना भक्ति का, प्रेजेंट इन भगवत गीता, वो प्रेजेंट था। और ये भगवत गीता किसने लिखी थी ये आपको भी पता चलेगा। स्क्रीम्ड बुक ऑफ हिंदुज़म की बुक है, विच इंक्लूड इन महाभारत, जो महाभारत भी मिली हुई है जिसके अंदर। ठीक है, ओके। In this Krishna, the god asked Arjuna, he he devote and friend to abandon all dharms and take refuge in his. So only he can set Arjuna free from every evil. This from a workshop gradually spent to different part of the country. Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and dividal workshop of a god or goddess rather. And then the performance of elaborate uh, s- uh, sa- side effects side effects are according to this system to believe if devote workshop the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the from in which he or she may deserve. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree, or any other forms. Once this idea granted, appearance artists made beautiful images of these details titles. भक्ति, नाउ अब हम पढ़ेंगे भक्ति के बारे में। भक्ति के बाद पोयम बाय बहाकता भक्ता। यार जो समझो आप लोग पढ़ रहे हो, अब वो कितना नींद आ रही होगी। मैं तो पढ़ा रही हूँ, मेरे को कितनी नींद आई होगी सोचो, आपसे ज़्यादा। चलो, भक्ति comes from the Sanskrit term bhaja. Bhaja means to divide or share. This suggests an intimate, intimate two ways relationship between the deity and the devote. Bhakti is directed. Bhakti is bhakti is direct, directed towards Bhagavata, which is often translated as God, but also means one who process and shares literally good fortune or beliefs.
the devote known as the Bhakta or the Bhaktavati, sorry, ही क्या बोल दिया मैंने, sorry, Bhaktavata shares his as shares his or her chosen dietary bhaga. नाउ कितना रह गया, बस थोड़ा सा बाकी। गाइस क्वेश्चन आंसर्स तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे बिकॉज, ठीक है मैं एज अ फॉलोइंग कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे बिकॉज के लिए टाइम आई मीन बहुत हो चुका है, 9:36 हो चुका है। तो हम लोग को कोशिश करना थोड़ी जल्दी जल्दी पड़े। गाइस ये वाला रहने दीजिए, ये वाला नहीं आएगा आपके, आई थिंक आ जाए, आई थिंक आएगा आएगा, छोड़ मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी, मैं पढ़ा देगा आप लोगों को। मैं कहा ऊपर चली गई इतनी। ओके, अ पोयम बाय भक्ता, मोस्ट भक्ति मोस्ट भक्ति मोस्ट भक्ति लिटरेचर। अब पहले तो मैं बोल रही हूँ गाइस, मैं ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है मेरे को, आई मीन कि इतना घंटा लग चुका है, ओ माय गॉड मैं आपसे क्या बोलूँ अब। तो भक्ति भक्ति रिलेचर relateral tells us that rich learning and high status do not uh, automatically ensure as a close relationship with the deity. This is a part of a poem composed in Tamil by Apple, devote of Shiva. We lived about 1400 years ago, appear with the Valier chapter 8। अच्छा वैलिया उसको बोलते हैं, पता है वैलिया किसको बोलते हैं, आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम? वैलियस वो उनको बोलते हैं जो क्या कहते हैं, अरे यार वो याद ही नहीं आ रहा, वैलियास, एक मिनट, रुको 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 रुको, आई विल टेल यू कि वैलिया क्या किसको कहते हैं, रुक जाओ, 2 मिनट्स वेट करना। हाँ गाइस, वो गाय सो वलिया, वलिया उसको कहते हैं तमिलनाडु में, तमिल में ना, इनके पास लार्ज ओनर, लैंड ओनर को कहते हैं वलिया, ठीक है। सो द लीपर विद रोटिंग limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavengers, even this man, if they are servants, i.e. devotes of his, who shelters the gay Ganga in his long hair. I Shiva, I worship them. That they are gods to me. Now guys, थोड़ा और बस हो गया हमारा। ओ माय गॉड मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई। इसके बाद guys, इसके बाद थोड़ा ये हो गया, बस ये वाला, आई थिंक ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है देखते हैं, लगने से लग रहा है इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ा दूंगी। फिर मैं एज अ फॉलोइंग गाइस, क्वेश्चन आंसर तो हो नहीं पाएगा बिकॉज टाइम बहुत हो चुका है अब, इसलिए फटाफट, because the deities were special. These images of deity were often placed within special homes, places that were described the temples. You will learn more about these temples in chapter 11 Bhakti inscribed some of the best expansion and art, solitaire poetry, and uh, and architecture. The word Hindu, like the term India, is derived from the river in Indus, derivated from the river Indus. It was used by Arabs
and I- Irenaeus, Iranians to refer to people who lived to the east of the river and to their culture culture participation culture practice including religion belief. Early easy where about यहाँ मैं आपको पढ़ा देता है चलो about 2000 years ago एक मिनट हाँ 2000 years about 2000 years ago Christianity emerged in West Asia. Jesus Christ was born in Balithians, which was then part of the Roman Empire. Christian's teachings were that he was the savior of world. He also taught people in tier tier others with loves and truth, others just as they themselves wanted to be treated. Her Here are a few years from Bible, the holy books that contains the uh, teaching of Christian. Blessed are those who hungry, those who hungry and thirsty for righteousness, for they shall be filled. Blessed are matureful. Blessed are the matureful, for they shall be, obtain marry. Blessed are to pure in heart, for they shall see God. Blessed are the PMX, for they shall be good sons of God. Christians teachings teach, teachings applied to ordinary people and spread through West Asia, Asia and Europe. The first Christianity sorry guys, sorry. The first Christianity preachers came from West Asia to the west coast of subcontinent. Within 100 years ago, Christianity spread. The Christianities of Kerala, known as Siaran Christians, because they probably came from West Asia, or amongst the olden Christianity continues in the world. थैंक गॉड चैप्टर खत्म हो गया ना ओनली लास्ट. सो स्टूडेंट्स, लास्ट आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा. ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो है मैच द फॉलोइंग. सो इस मैच द फॉलोइंग में हम फर्स्ट 8 मिनट मैंने ना क्या कहते हैं ये अपना मैंने लर्न करके रख रखा है. सो मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को याद कर लेने दो, ठीक है. हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का हमारा क्या है मुनवेंद्र मुनवेंद्रा मुनवेंद्रा का क्या आएगा छोलास चीरास एंड पांड्यास. ठीक है, इसका आएगा ये
लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिया पथा। इस इसका आएगा मान्या बुद्धिज्म। ये इसका नाव उसके बाद आशीर्वाद वाग होशिया। इसका आएगा बुद्धिशार बुद्धिचेस नहीं, बुद्धि चैरिटी। ओके। बॉन्डी क्षत्रिय। बॉन्डी क्षत्रिय का क्या आएगा? हाँ, साताव सताव सतावह सतावहना रूलर्स। ठीक है। और ये तो आएगा जाहून जैंग का पिलग्रिम्स। सो गाइज, ये कुछ मैच द फॉलोइंग से जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये कुछ मैच द फॉलोइंग से जो हमने कर लिए हैं, आप इनको अपने बुक में कर लेना पेंसिल से। सो टुडे वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में अगर आपको मज़ा आया होगा गाइस, मज़ा आपको अगर नहीं आया होगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जो मेहनत लगी है ना ये वीडियो बनाने के लिए, मैं बहुत देर पहले लगी थी। आपको मालूम नहीं कब स्टार्ट हुई थी मेरी वीडियो, और अभी पता है कितने टाइम और है? आई विल शो यू। आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इस चीज़ का। 9:50 हो रहे हैं गाइस, 9:50। लाइक आई मीन 9:50 कब हो गए मुझे तो ये भी मालूम नहीं चला। सो गाइज, मुझे आपके साथ ये मतलब कि ये वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैं बहुत थक भी गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। बाय बाय।